Hello, dear student. Now we are going to see once again a new topic, and the name of topic is the squares of natural numbers having all digits 1. Square of natural number having all digits 1 means like suppose 1 square, then 11 square, then triple 1 square, then 4 टाइम 1 आ गया तो स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करना. So this type of number, square of this type of number, that is squares of natural numbers having all digit 1. All digit 1 means unit place digit 1, tens place be 1, 100 place be 1, 1000 place be 1, 10,000 be 1. सो ऐसे टाइप के नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करने के सिंपल से ट्रिक क्या है. 11 स्क्वायर से 11 स्क्वायर ऑलरेडी आपको मालूम है. 11 स्क्वायर कितना होता है 121. आपको क्या करना सिर्फ देखो इसमें 1 कितने टाइम आया 2 टाइम तो 1 2 1. अब इसमें 1 3 टाइम है सो आपको 3 तक जाना है 1 2 3 देन रिवर्स द नंबर 2 1. 1 कितने टाइम इसमें 4 टाइम तो 1 2 3 4 देन रिवर्स द नंबर 1 2 3 4 देन 4 के बाद 3 2 1. जितने टाइम 1 है उतने डिजिट तक जाना देन रिवर्स द नंबर. नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 सो 1 2 3 4 5 देन रिवर्स द नंबर 4 3 2 1. then 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 है so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 6 तक मेंशन किया 1 2 3 4 5 6 then reverse the number till 1 so 5 4 3 2 1. नाउ इसमें चेकआउट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है so 1 2 3 4 5 6 7 then reverse the number 6 5 4 3 2 1. so ये एक सिंपल सा ट्रिक है. 2 टाइम्स 1 है सो आंसर 1 2 1. 3 टाइम 1 है सो 1 2 3 2 1. 4 टाइम 1 है सो 1 2 3 4 3 2 1. रिवर्स करना नंबर. सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या आता है. ओके सो सिंपल ट्रिक है आप फिट रखिए आपको बहुत काम आएगा. थैंक यू सो मच.